न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदायज्ञम् अहं भोजनं न भोजनं नैव भोज्यम् न सदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्. Om Shri Sai Ram. We offer our most humble salutations at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan. On the auspicious occasion of Bhagwan Shri Satya Sai Baba's 95th birthday, we, the young messengers of Eastern Zone of India, are going to offer 2 pushpas centered upon Shanti and Indriya Nigraha at thy lotus feet. We take this opportunity to welcome all the elders, devotees, young messengers, Balvikas children to this august gathering. This presentation is unique in the sense for the fact that it has representation from the farthest land of Arunachal Pradesh, the land where the sun rises first, with its neighboring states of Assam and Meghalaya. The Juggernaut moves to Sikkim, the land that vibrates with the youthful activities. Moving to Manipur, the land of classical dance, followed by West Bengal, the land of Ramakrishna, Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore, famous for its art and culture, and finally reaching Odisha, the land of Lord Jagannatha, the land of Bhakti. Om Shri Sai Ram. Now, we the Sai young messengers from Sri Satya Sai Seva organizations, Manipur, shall offer Vedam chanting and Gita slokas to our beloved Lord Bhagwan Sri Satya Sai Baba. In the year 1968, Bhagwan Sri Satya Sai Baba, during his 43rd birthday celebrations, declared, quote, "My main task is re-establishment of the Vedas and Shastras and to reveal the knowledge of them to all people. I have to reveal to the people the word of the Vedas, the Shastras and other spiritual texts. I have to instruct to all the essence of the Vedas, to shower on all the ancient wisdom and also to preserve it." Unquote. We shall now begin our offerings by chanting Ganapati Prarthana to Lord Ganesha, the Lord of groups of demigods, who removes obstacles, who is omniscient, and who grants both treasure of food and treasure of wisdom to his devotees. Om
ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. After Ganapati Prathana, the Sai youth Jains of Sri Satya Sai Seva Organizations Manipur will chant Sai Gayatri as an invocation to our beloved Lord Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Jai Sai Ram. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. शान्ति शान्ति शान्तिः. Om Shri Sai Ram. With the invocation of Lord Ganesha and our beloved Lord Bhagwan Sri Satya Sai Baba, Sayuts Mahila of Sri Satya Sai Seva Organizations Manipur will now carry on with further offerings. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. As we carry on with our offerings to our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba, the Sai Youths Mahila of Sri Satya Sai Seva Organizations Manipur will now offer the flower of peace and the flower of sense control with the chantings of 3 slokas from Bhagavad Gita. Jai Sai Ram. नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः यतेन्द्रियः. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरनन्तरम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Om Shri Sai Ram. Now, our Sai sisters from Manipur will be chanting Sivopasana. These are set of mantras related to the installing of the Sivalinga, prayers to the Panchamukhas of Lord Shiva, and mantras of salutation to Lord Shiva and Shiva Tattva. Swami says, quote, Shiva is adored as a teacher of teachers, Dakshana Murti. The form of Shiva is itself a great lesson in tolerance and forbearance. Unquote. Jai Sai Ram. निधनपतये नमः. निधनपतान्तिकाय नमः.
नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतौ विरूपाक्षौ विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कद्रुद्राय प्रचेतसे मीधुष्टमाय तव्यसे गोचे मशन्तमगुं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Sri Sai Ram. Moving on to the next offering, we have Santi Puspam, the flower of peace. Swami says that the reason we do not have peace is because of our ego, the I, and our desire, the want. The whole purpose of spiritual sadhana is to minimize our ego and to minimize our desires. As soon as ego lives, one realizes the inner divinity. Now, our Sai Youth Mahila of Sri Satya Sai Seva Organizations, Manipur, will be offering Mantra Puspam at his divine lotus feet. These stanzas in the Mantra Puspam are based on the truth of creation that from the Atman or self first emerged the sky. From sky came air, from the air came fire, from the fire came water, and from the water emerged the earth. The source of all the elements is the one Atma. According to Bhagavan Sri Satya Sai Baba, the water of life is love. Therefore, love is the origin of everything, and one who knows love attains the highest divine abode. Jai Sai Ram. Yopam pushpam veda
चन्द्रमावा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनो वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनो वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो शुनावम् प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shri Sai Ram. As we move on to the concluding part of our offerings, we shall now chant Shanti Mantram. Jai Sai Ram. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम् महिषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Sai Ram. Bhagavan explains Indriya Nigraha with a beautiful analogy where he compares the human body to a car. Two eyes of the human body to the two lights of the car, the petrol tank to the stomach, the mind to the steering, the horn to the mouth, and the four Purusharthak, Dharma, Artha, Kama, and Moksha to the four tires of the car. These four tires, he explains his faith. Here, when one puts on the switch, which is the intelligence in us, then the car starts. Here, the Chitta is compared with the Indriya Nigraha. When we control the Indriyas, it is then that our Chitta body gets purified. When the Chitta is purified, then the wisdom dawns. The easiest sadhana to control our senses is to perform our actions with a sense of dedication and surrender to Bhagavan. All the work we undertake must be carried out with the spirit Sarva Karma Bhagavat Prityartham, doing all the actions to please Bhagavan. The female wing of Sayut of Sikkim, East Zone, offer their Indriya Nigraha Puspam through the garland of bhajans to the divine lotus feet of Bhagavan. Jai Sai Ram. बनकर गीत हमारे
Sai Ram. Shanti denotes the capacity to bear success and failure, joy and misery with perfect equanimity. The foundation for real peace is, according to the Vedas, the quality of Maitri. Maitri means amicability, friendship, compassion and kindness. It can also be taken to mean Maitri. This is to say, my word, deed and thought should be in accordance with words, thought and deed. This is to say, we shall speak, think and act together without friction nor fraction in an atmosphere of love and understanding. The male wing of the Sai Youth of Sri Satya Sai Seva Organization, Sikkim East Zone, offer their Shanti Pushpam, the flower of peace, from Ashta Pushpam through this boutique of instrumental rendition at the divine lotus feet of our beloved, beautiful Bhagwan on this auspicious occasion of the divine 95th birthday celebration. Jai Sai Ram.
Om Shri Sai Ram. We welcome you to the state of Odisha, historically known as Utkala, the land of excellent architecture. The place which has a history of Emperor Ashoka coming all the way from Magadha to conquer this land, but ultimately got transformed from Chandashoka to Dharmashoka. The land of Lord Jagannath is indeed blessed to have a beautiful mix of all the cultures that we notice in the entire land of Bharata. This is the land of Bhakta Kavi Jayadeva, a devotee par excellence from whom the Lord himself penned down the verses of Gita Govinda. The culture of Odisha is no different than that of Prashanti Nilayam. One can easily experience the similarities between Lord Jagannath and Lord Sainath. The state of Odisha is now going to offer this humble presentation. Unmilana, the journey inward. Jai Sai Ram. I am the creator of this wondrous creation. The creation has evolved out of me. I am the creation. चांद और सूरज I am the time eternal and time beyond. तुमने बनाए नदियाँ सागर, तुमने बनाए नदियाँ सागर, तुमने बनाए ब्रह्मांड नायका बाबा, परतिपुरीश्वर बाबा. I am the creation. I am the life. I am the Purusha and also the Prakriti. सूर्य चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे बरसंती ज्योति राशि, तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभात रे हसाई आनंदे भासी. धन्य महाप्रभु महिमा तुम्हार अटे अनंत पार, अटे अनंत पार. I draw the creation to me and the creation draws me towards it. This is the mystery of my creation.
The universe has emerged from me and will ultimately merge in me. यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगा Prakriti, which holds the Indriyas within, stands in the way between me and the creation. तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविचरन्ति. The path is difficult, but can certainly be accomplished. The control of senses is the pathway to eternal peace. The attraction of sound ties the jiva with the creation. शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंगमिना भृङ्गः नरः पञ्च भिरञ्चिताः किम्. The deer, the elephant, the fish, the insect meet their end being swayed by just one indriya. What to speak of the human who gets trapped by all the indriyas at one time? मृगमोहित शब्द फासे निशेषे प्राण शब्द आसे गन्ध प्रभावे भृङ्ग गण मोहिब पद्म परागेण. Deluded by sound, a deer loses its life. Getting attracted by the smell of lotus, a bee loses its life. गज विराट पशुवर स्पर्श आशारे नरखार रस कामना मीना करी प्राण तेजई थोप धरी प्राण तेजई थोप धरी प्राण तेजई थोप धरी. Illusioned by the desire of touch, the giant elephant falls in the hunter's pit and turns into a servant. With the greed of food, the fish falls into the trap of fisherman and loses its life. अग्नि रूपरे भଳି कीट सळखिनिए मृत्यु बाट भव मायार प्रलोभन मोहित करे नर प्राण मोहित करे नर प्राण मोहित करे नर प्राण. Getting attracted by the temptation of light, insects get into fire. The temptation of attachment
and Maya makes a wing go astray from the path of supreme peace. मोह माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपने शरण मिले लो। हे प्रभु अपने शरण मिले लो। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु से, पग पग तू ही संभाले। O Lord, please take care of us every moment in the sea of worldliness. Liberate us from the bondage of illusion, the Maya. O Lord, save us. साईश शरणं गच्छामि, परतीश शरणं गच्छामि। As our loving Bhagavan says, you cannot destroy the senses, but you can regulate and control it. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागमसस्तनुभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साश्रो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। It is not the control of senses, but their proper management. One who controls the senses and manages them properly is a true yogi. Indriyani paranyahurindriyebhya param manah, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा। In order to receive supreme peace by regulating the mind and thereby enlightening oneself with the inner voice of the intellect, O mind, take the refuge at the Divine Master, the Guru. मानस भजरे गुरु चरणं, मानस भजरे गुरु चरणं, दुस्तर भवसागर तरणं, दुस्तर भवसागर तरणं। O mind, do not get carried away by the dream. Sooner or later, you have to get back from the source you originated, that is, the abode of supreme peace, Prashanti Nilayam.
चल रे मन अपने धाम, चल रे मन अपने धाम, चल रे मन अपने धाम, चल रे मन अपने धाम। इस जग में परदेस है बंदे, इस जग में परदेस है बंदे, भटक रहा क्यों सुबह शाम, भटक रहा क्यों सुबह शाम। O mind, understand, there is no peace without chanting the glory of the Lord. Chant and sing the name of Hari with joy. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। Tame your mind and the divine energy every moment and focus on the service of the poor and needy. दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा, साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। Remember, your life is not just your own. Dedicate your life in the service of humanity. सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। Therefore, regulate your indriyas in the right direction. The God-gifted eyes become blessed when it sees God in the whole universe. अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। The life finds its fulfillment when it realizes that every sound heard by the ears is that of Shabda Brahma. पिबरे राम रसम
रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम राम रसम राम रसम राम रसम राम रसम। When the breath is stable, the mind too gets stable on its own by chanting Soham, Soham. Soham, Soham, ध्यान करो सद्गुरु साई, ध्यान करो सोहम सोहम, ध्यान करो। And let us resound the vibration of Sai Rama in our every breath. तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले जय साई राम राम, जय राधे श्याम, जय साई राम राम, जय राधे श्याम। Soft, sweet words create an atmic bond with the universe. Therefore, O tongue, engage yourself in chanting the divine name. करो मन मेरो, साई गुण गान करो मन मेरो, हरि गुण गान करो मन मेरो। The path is one only, the path of Indriya Nigraha. Only Indriya Nigraha will get you peace. Then only you will be blessed with the Ashtapushpa of Ahimsa, Indriya Nigraha, Sarvabhuta Daya, Kshama, Dhyana, Tapa, Shanti, Satya, and you will attain supreme peace. है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में,
प्रभु प्रेम में, साई प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। Sai Ram. Now, we, the Sai young messengers from the states of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh, together offer a garland of musical renditions which would culminate with Vedic chants on the themes of Shanti and Indriya Nigraha. We pray to Swami, our divine Guru, for his blessings and grace and his acceptance of our humble offerings. Bhagavan says Shanti is another name for steadiness of the mind. Peace is a sacred virtue. It is the embodiment of the self. It is an ornament to man. The heart of the selfless one is its abode. Bhagavan further says Shanti denotes the capacity to bear success and failure, joy and misery with perfect equanimity. It is there, deep down, as the very core of our being. Only thoughts of God and intense love for Him bring peace. With the words of Bhagavan resonating in our hearts, let us sing His name and glory and pray to Him to shower on all of us Shanti. भजन बिना सुख शांति नहीं, साईं भजन बिना सुख शांति नहीं, साईं भजन बिना सुख शांति नहीं, साईं नाम बिना आनंद नहीं, साईं नाम बिना सत्य साई रामा हे घनश्यामा, सत्य साई रामा हे घनश्यामा, प्रेम सुधा बरसो, शांति सुधा बरसो, प्रेम सुधा बरसो, शांति सुधा बरसो, सत्य साई रामा हे घनश्यामा, सत्य साई रामा हे घनश्यामा, कलियुग में तुम युग अवतारी, कलियुग में तुम युग अवतारी, सत्य साई रामा हे घनश्यामा, सत्य साई रामा हे घनश्यामा, सत्य साई रामा हे घनश्यामा, सत्य साई रामा हे घनश्यामा। सत्य धर्म शांति प्रेम सबको दीजो, सत्य धर्म शांति प्रेम सबको दीजो, सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप आप है, सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप आप है, सत्य धर्म शांति प्रेम जीवन का मर्म है, सत्य धर्म शांति प्रेम जीवन
Our divine Guru says, perfect peace means the type of peace derived as a result of the absence of desire, anger, greed, and hatred. Peace must be expressed in feeling, word, posture, and action, also in mind and the performance of duty, all in uniform measure. Then, peace becomes perfect, the highest and most stable type. Genuine peace is won by control of senses. Pure love can emanate only from a heart immersed in peace. From Swami's words, it is clear that sense control and peace are inseparable aspects of a spiritual life. Once again, let us pray to our dear Lord for physical, mental, and spiritual strength and well-being. O Swami, kindly enable us to become instruments in your hands and in your divine mission. Let us all practice Indriya Nigraha or control of senses. In the words of Bhagavan, offer to God the flower of sense control. All spiritual practices will prove futile if you lack sense control. Swami has repeatedly reminded us of the necessity of sense control in every spiritual aspirant or seeker's life. And how merciful our Lord is. He is ever ready to remove our doubts and to rejuvenate our drooping morale. He tells us, you often express your inability, thinking, Swami, is it possible for us? I am emphatically saying that it is possible, provided you make an effort with firm determination. When you are able to please God and obtain His grace, sense control is not a big task for you. Like a loving mother, Swami leads us towards spiritual realization. We need only to fervently seek the mother's love, mercy, peace, and blessings for freedom from confusion. साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे तुम हो बाबा दया के सागर तुम हो बाबा दया के सागर तुम हो गुण मंदिर नटनागर तुम हो गुण मंदिर नटनागर आदि अनंत है सत्य सनातन आदि अनंत है सत्य सनातन अलख निरंजन साई जनार्दन अलख निरंजन साई जनार्दन सच्चिदानंद प्रभु कृपा कर प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे Our Divine Mother says, first, self-effort should be there. Everything is within you. Spirituality and liberation don't come from outside, but come from within. All that is required is self-inquiry. We know what are the good qualities and the bad qualities in us. Remove the bad qualities and develop the good qualities. That is the greatest sadhana. For our sadhana,
Swami has given us the 5 human values of truth, righteousness, love, non-violence, and peace. The eternal verities of Satya, Dharma, Prema, Ahimsa and Shanti have in fact nurtured this sacred land of Bharata since time immemorial. Let us be firmly established on them. Let us thus become filled with peace. Let us pray for Vishwa Shanti. ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ছাত্রছাত্রীরা তোমার নবীন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের সকল ভক্তবৃন্দের তরফ থেকে তোমায় জানাই শুভ জন্মদিন। আমরা তোমায় খুব খুব ভালোবাসি স্বামী সাইরাম। हे परम प्रेममय स्वामी, आमे श्री सत्यसाई सेवा संगठन ओडिशार युव वार्तावह भाई भौणी आपणक आश्रित भक्त तथा आपणकर अति प्रिय बाल विकास छात्र छात्री समस्ते आपणको आपणक जन्मदिनर हृदय भरा अभिनंदन जनाउछु। स्वामी आमे आपणको बहुत भल पाऊ। साईराम। परम प्रिय स्वामी, আমি অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ৰ চাই যুৱ সংঘত বাসক তোমাৰ ভক্তগণ আৰু বাল বিকাশৰ শিশুসমূহে তোমাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে তোমাক ओम श्री साईराम। पुम्नमक्तगी थोइदोक हेंदोकना नुसिजैबा स्वामी, श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशंस मणिपुरदगी नाहागे पाउजेलोय ओइजरिबा साई नाहारोल सिंह, नाहाकपु निंगजरिबासिंग अमसुंग नाहागे बाल विकास की अंगांगसिंग अखोय पुम्नमक्ना स्वामीबु स्वामीगी इपोक नुमित असिदा याइफरबा इपोक नुमित अमा ओइबियु हाइना याइफा पाउजेल पिजरी। अखोय पुम्नमक्ना स्वामी नाहाकपु नुंसिजै। जय साईराम। का हेनजा आवासाई ngo nemika henjene hime ako silo nik obo vidu alo ho hempio alo ngo Arunachal Pradesh होके hime ako। प्रिय स्वामी, हामी सिक्किम राज्यका साई युवा सन्देश वाहक भक्तगण बाल विकासका छात्र छात्राहरू तपाईलाई शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदायज्ञम् अहं भोजनं न भोजनं नैव भोज्यम् न सदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सदानन्दरूपं शिवो